Hello, my tiny dolls. How are you doing? I hope you're doing great at learning chapters with me. Are you? Very good. So, welcome back to the Forward Trip. Hi, kids. And the cap. And our today's chapter is very interesting. And I'm sure you are going to enjoy this chapter because it's about be a good friend. How to be a good friend. Okay? Let's start our class. Okay, so be a good friend. And how can you be a good friend? आप एक अच्छा friend, अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं? So, I will tell you about that. Okay? A good friend is someone. एक friend वो होता है, एक अच्छा friend वो होता है जो offers to help, जो हमारी हमेशा help के लिए ready हो, ठीक है? अगर हमें किसी का फ्रेंड बनना है तो हमें भी हमेशा हेल्प के लिए रेडी होना चाहिए. ओके, अगर उसे कुछ चीज चाहिए, अगर वो कहीं गिर गया है, सो वी शुड ऑफर इमीडिएट हेल्प. ओके, दिस इज ऑफर्स टू हेल्प. हमें उसकी तुरंत एकदम हेल्प करनी चाहिए. ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट टू बिकम अ गुड फ्रेंड. नेक्स्ट इज लिसन्स टू यू, जो आपकी बात सुने. ठीक है, अगर आप कोई स्टोरी उनसे शेयर कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो वो आपकी बात सुने. ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करे. और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. ठीक है, तो कोई आपको कोई बात बता रहा है, so you have to listen to it. ओके, आपका ध्यान प्ले में, आप कुछ खेल रहे हैं, आप कुछ और किसी और से बात कर रहे हैं. नो, we should not do like this. We should listen to her. Okay, that was the second point. Now next is support, जो आपको हमेशा सपोर्ट करे. ओके, दैट इज अ गुड फ्रेंड, जो आपको हमेशा सपोर्ट करे. ओके, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको हमेशा सपोर्ट करे. दैट इज अ गुड फ्रेंड. नेक्स्ट इज केयर, जो आपकी केयर करे. ओके, द वन हु केयर्स फॉर यू. जैसे कि अगर आपको कोल्ड हो रहा है, आपको कॉफिंग हो रही है, तो आपकी केयर करे. ठीक है, आपको कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड वाटर ना पिलाए, आपको हॉट वाटर पिलाए. दैट इज मीन्स केयरिंग. ओके, सो और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. अगर आपको एक गुड फ्रेंड बनना है, तो आपको भी केयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की. ओके, दैट्स हाउ यू विल बिकम अ गुड फ्रेंड. नेक्स्ट इज शोज रिस्पेक्ट, वो सबकी रिस्पेक्ट करे, चाहे वो कोई बड़ा हो, छोटा हो, या कोई एनिमल क्यों ना हो. You should respect everyone. Okay, और इससे आप एक अच्छे फ्रेंड ही नहीं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ह्यूमन भी बन सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज फॉरगिव, जो आपको आपकी मिस्टेक्स के लिए, आपकी गलतियों के लिए आपको फॉरगिव करते हैं. ओके, बट अगर कोई आपको फॉरगिव करता है, सो डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स अगेन. ओके, बिकॉज उसने आपको फॉरगिव कर दिया, आपको माफ कर दिया. ओके, so we should not repeat the same mistake again and again. Okay, that means forgiving. आपको forgive करना आना चाहिए, आपको माफ करना आना चाहिए. Okay, and how you will do? By saying sorry. कोई आपको sorry बोलता है, तो say it's okay. Like this you can forgive. आप माफ कर सकते हो. Next is smiles. You should have a smiling face like me. See, I have a smiling face, right? You should also have a smiling face. Always smile. अगर कोई आपको देख रहा है, कोई कुछ आपके से बात कर रहा है, so you should smile. Okay. Next is accepts everyone. कोई आपसे बात करने आ रहा है, कोई आपके पास से बैठने आ रहा है, कहते रहो, can I sit with you? So you should accept everyone. Okay, you can't say no, don't sit with me. No, never say like that. Accept everyone. Okay, last is shares. It's very important. Sharing is caring, right? So you should share everything with you, like your food, your things, your toys, your games. You should share. Okay, and your friend also should share with you.
That is how you can become a good friend, because sharing is caring. Okay? Okay. And next is activity. Let's do this activity now. How much do you know about your best friend? Let's find out. So here we have to find out about a best friend. I will ask some questions and you will answer there. Okay? First question is, my best friend's name. What is your best friend name? Come on, tell me everyone. Okay. Now I will write my best friend name here. Okay. Suppose my best friend name is Mansi. So I will write here Mansi. Okay. Mansi. And please don't write Mansi. You will write your best friend's name. Okay. Next is his or her birthday. When his or her birthday. इसका birthday कब आता है? Do you know? You should know. आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पता होना चाहिए. ओके? अगर नहीं पता तो आप पूछेंगे and then write it here. Okay? Okay. So next is his or her favorite food. उसका favorite खाना कौन सा है? French fries, burger, pizza. उसका favorite food कौन सा है? You should know that and you will write it here. Okay? Next is his or her favorite toy. उसका favorite toy कौन सा है? Like Barbie है या फिर Ludo है, whatever the favorite toy is. जिससे वो खेलती है daily. Okay? Write it here. Next is his or her favorite game. उसका favorite game कौन सा है? Cricket, badminton, anything it can be favorite like Ludo, playing chess. There are many games, right? So which game is the favorite game of hers? You will write that here. And if you don't know, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनसे आज ही पूछेंगे and then you will write it here. Okay? Next is, this is me and my best friend. You have to click a picture with your best friend and you will paste it in this box. Okay? That is very funny activity, right? Okay, so did you enjoy this chapter with me? Yes, because I enjoyed it very much. So we did how to become a good friend, how to be a good friend, right? So please follow these instructions and then you will be a good friend. Now I will see you in the next class. Till then, happy learning. Bye bye. Take care.